वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। मैं हूँ हसीका अली और मेरे साथ हैं तारिक नियाजी। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। दोस्तों जहाँ रहें खुश रहें, माँ बाप का ख्याल करें, क्योंकि माँ बाप हैं तो सब कुछ है। आज की हमारी वीडियो है कृष्णाज विलेज, मोस्ट रिक्वेस्टेड वीडियो। सो स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। लेट्स स्टार्ट। ओके गाइस, तो वीडियो का टाइटल है कृष्णाज विलेज ऑफ पीस। सो स्टार्ट करते हैं। अमन का गाँव, कृष्णाज अमन का गाँव, ऑनलाइन ड्रॉप 2018। वाओ, मेला लगा हुआ है ना कोई ऐसा? ऐसा ही है, फॉरेनर्स स्विंग स्विंग। वाओ, गवर्नमेंट गई हाँ, फॉरेनर्स हैं सारे। क्या बात है। वाह 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 वाह, ग्रेट। ओह, टैटूज कितने सारे बनवाए हैं। खुशी चेक करेंगे। हरे कृष्णा 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 हरे कृष्णा। ये देखिए, हरे रामा हरे रामा हरे रामा राम राम हरे हरे। मेला लग रहा है। मैं बोल रही हूँ ऐसा टाइप का ही लग रहा है। ये देखिए, कॉन्सर्ट भी चल रहा है। वाओ, फुल यहाँ सब मिलेंगे छत के नीचे हमको। छत भी तो नहीं We've been participating in this festival, this Woodstock festival, now called Poland Rock, for 24 years. And अच्छा, we've had this village at every time, at every event. अच्छा विलेज बना हुआ है। And there's a lot happening here at Krishna's Village of Peace. It's kind of like, if you ask the kids at this festival, and there's over 1 million of them, where's the place to be? Many of them will say it's Krishna's Village of Peace. The atmosphere, they say the atmosphere is special. अच्छा, पीस फेस्टिवल। We know why it's special because, well, it's like Vaikuntha. सुकून, अमन। Because the 9 processes of devotional service are taking place here in a very wonderful way. And yeah, it's a place where there's no anxiety. We're just stepping out of Krishna's Village of Peace now, and you can feel the whole atmosphere is changing. It's quite tense out here ये देखिए, at this rock and roll festival. But yeah, so it's our village is the place to be because, well, there's a lot of transcendental entertainment going on. I think ये A large variety of transcendental यहीं entertainment. आ गए हैं। Pakistani Saraswati decided he was going to print a newspaper every day about the activities in the Vaishnav community. And he's going to print it every day. He was serious about it. And a local newspaper reporter came to see him, and he said, how can you print something every day about, you know, Krishna consciousness, about activities and devotional service? It's just, you have such a small community. And Bhaktisiddhanta Saraswati replied, he said, actually, we have much more news than you do because our news is news of the spiritual world. And he says this material world is only 1/4 of God's creation, 3/4, actually unlimited, is the spiritual world. ये देखिए, So like that, when the kids come to our event, there's just and so many different activities that they can engage in. And the nature of those activities, like any activity in Krishna consciousness, is one never gets satiated. Material life, whatever you do, you know, you start out enjoying it, but very quickly you get bored and you start looking for something else. Not so with Krishna conscious क्या activity. बात है। So ये the देखिए, kids come back to our festival every year. So, I mean, so many of them come back every year. And a lot of them just stay in our village the whole 3 or 4 days of the Poland Rock Festival, the Woodstock Festival. हरे कृष्णा हरे कृष्णा ये देखिए, enjoyment। कृष्णा कृष्णा हरे 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 रामा हरे रामा
बात है। Krishna Krishna Hare 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 Rama Hare Rama 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 Village of Peace है। Village of Hare Krishna Hare Krishna ये देखें Krishna ये Krishna लोग धोती पहने हुए हैं। शर्ट ये उन्होंने साड़ी पहनी है सब Hare Rama 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 Hare Hare सफाइयाँ भी कर रहे हैं। अच्छा बाहर का भी करती है है ना? हाँ जी टोटल टोटल देखिए ना इन्होंने एक कृष्णा विलेज ऑफ फेस्टिवल है। फेस्टिवल लगाया हुआ एवरी ईयर एवरी हर साल देखे ना We're getting close to the mark of 150,000 plates, 42 tons of boga. food for peace Then we have a questions and answers tent as well, with many senior preachers, Polish and international, answering questions on the philosophy of Krishna consciousness. And our experience over the years is that, well, the questions get deeper and deeper. The people really know us. They spend time with us. You know, this is an intense experience here, this festival. So they spend time with us, and they get to know the devotees. Many of them keep contact with the devotees as friends through the year, or they write, कितने or they खुश दिख visit रहे some of our हैं। centers here in Poland, start chanting. And so when they और come ये चीज़ें कहाँ to मिलती hear हैं यार? that Foreign any question countries they में इस तरह have के about माहौल, Krishna इस consciousness तरह can be का answered. And as we followers of this Vaishnava tradition know, there's no question that cannot be answered about spiritual life. That's the beauty of our philosophy. The 700 concise verses of Bhagavad Gita, any question you have can be answered. One time Prabhupada asked one of my godbrothers, Bhagavan Das, to write a book, Spiritual Solutions to Material Problems. And Prabhupada said, that book could be endless because this material world is problematic. But there's an answer to every question. So the kids come, ये देखिए ना ये सिर लगा they inquire about the purpose of life, प्रभुपाद you know, what's the soul, what happens at death, नहीं वो सिर what लगा is नहीं थे मुझे God, हैप्पी ने why वो is करा there था such a struggle? And they're serious, they actually sit there, and they're serious about the questions. And some of them sit there for many, many hours. And we have a yoga, योगा a tent where they can start to learn yoga. Of course, yoga is very popular, but just being with devotees again is such a pleasant experience, such an enlivening experience that although there's many yoga schools throughout Poland, somehow our yoga tent's just full to the maximum. We have to have 4 or 5 different yoga teachers over these 4 or 5 days to keep up with the demand. Hare Krishna Hare Krishna ये मुझे लग रहा है ये जो उन्हीं को जो हैप्पीज को जिन्होंने कहा नहीं था हरे कृष्णा हरे हरे ये वही चलता हुआ मुझे लग रहा है सुनने से। ये उसी से रिलेट कर रहा है वही चलता हुआ Hare Rama ये अब भी तक इन चीज़ों को फॉलो कर रहे Hare Hare और भी लोग जुड़ गए हैं हाँ जुड़ गए और Hare खुशी देखिए Krishna Hare Krishna 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 देखिए ना। Hare 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 बड़ा Rama विलेज लेकिन छोटी है Hare Rama ये विलेज बहुत प्यारा है Rama Rama Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare ये मेडिटेशन है इनके लिए सुकून बिल्कुल अमन Peace। ये देखिए ना। The whole purpose of our village is just to engage people's senses in Krishna consciousness. Hear
when they come to our village, Krishna's Village of Peace, it's like an immediate transformation, because what we're doing is you could say we're awakening their spiritual senses. Within this material body, there's a spirit soul, and that spirit soul is a person. We have a spiritual body. Ultimately, we are the spiritual body in the spiritual world, in a loving relationship with Krishna. So Krishna's Village of Peace, we begin to awaken those spiritual senses. They see all the beautiful devotees, they see the different exhibits, they see the kirtans, they see all the activities going on, they smell the incense, smell the cooking, they hear the kirtan, they taste the prasadam, their mind's engaged, their intelligence is engaged in asking questions, so forth and so on. So the whole idea of the village is just to awaken their transcendental senses. And for the Vaishnavas, this is the most satisfying experience. Krishna consciousness is very, very potent. It works very quickly. One doesn't have to wait 1,000 lifetimes through the yoga process to get a glimmer of the super soul within the heart. One doesn't have to take many births and study the different Vedic scriptures to come to the understanding that the absolute truth is Krishna, the Supreme Personality of Godhead. Those processes are there, but by the mercy of Lord Chaitanya Mahaprabhu and his emissary Srila Prabhupada, this process has an immediate effect. Many, many people here, they become so deeply touched by the activities going on at Krishna's Village of Peace that, again, they take up the process all year. And many of them tell me that they wait all year long for Krishna's Village of Peace. One boy said, I wait all year long to taste this halava. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. अच्छा एक दूसरे से बहुत जुड़े हुए हैं, बड़ा अटैच्ड है. Rama Rama, Hare Hare. रथ के लेके जा रहे हैं. अच्छा केदारनाथ के मंदिर में से क्या है अपना रथ निकाल कर मैं बोल नहीं वही है. अच्छा वो थोड़ा सा Probably the most popular tent of all is the mantra yoga tent, where the kids come and they chant. Now many, many years ago, say 10 or 15 years ago, the kids would come in, 300, 400, 500, 1,000 kids, and they would chant, and they'd just be into the music or the drum beat. But I'm noticing now the intensity with which they chant. You could even say the devotion, the surrender, the feeling of dependence on Krishna. Somehow they catch that mood. Bhakti Vinod Thakur, Srila Bhaktivinoda Thakur said, Krishna consciousness is something that's imbibed from other devotees. It's like you catch that good disease of Krishna consciousness, especially when there's many devotees chanting together, because that is the process for the sage. Lord Chaitanya, the Yuga Avatar, he descended to introduce congregational chanting, many devotees chanting together. And just that mercy flowing, it's just an abode of mercy, the mantra yoga tent. People get that sense of Krishna consciousness and they chant. We often say chant from the heart. Sometimes I'm watching those kids chanting and I'm thinking, I wish I could chant like that. I wish I could call out to Krishna without any reservation, without any hesitation, just Atma-nivedan and fully surrender. So, in one sense, I'm learning from the kids who come here how to chant. At least I'm inspired by them. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare.
indebted to the organizers for having us come every year. They're our good friends, and they're doing this festival as an appreciation for all the youth of this country who help them raise money for disabled children in अच्छा कैंपिंग hospitals. की हुई है And खेमे लगे yeah, we love these kids. We love the youth here because they're reciprocating with us, and they flash us the peace sign all the time. They smile at us, so forth. So we see them like part of our family. It wasn't so many years ago that people like myself were intense like this. I remember in the 1960s in Golden Gate Hare Park, Krishna food for San Francisco, sometimes I just see myself in the faces of these devotees. It wasn't long ago that we were also in such a condition. Somehow or other Prabhupada came and his representatives, his disciples came, and they saved us. So we're doing the same business. This gives us such pleasure, it gives us such satisfaction to share our good fortune with the people here at Woodstock. And we hope that this event will go on for another 24 years, and our disciples and our followers in the years to come will carry on with this great tradition of Krishna's Village of Peace at Woodstock, at Poland Rock, for as many years as can come. Oh, glories to Prabhupada, Shri Chaitanya Mahaprabhu ki, Shri Shivada Sham Sundar ki, Shri Vrindavan Dham ki, Go Premanande. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, हरे कृष्ण हरे राम Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. क्या बात है, जबरदस्त, बहुत ही आला, ओके जी जनाब बहुत ही कमाल। अच्छा प्रॉपर फेस्टिवल की तरह सेलिब्रेट किया मेला मेला बिल्कुल, जहाँ पे हर तरह का अच्छा मतलब कैंपिंग भी है, कॉन्सर्ट की तरह वो मतलब 4 दिन का मेरे ख्याल में शायद 4 डेज अच्छा का एवरी ईयर मुझे सबसे अच्छी बात ये लगी कि हर साल मतलब जैसे हम ईद वगैरह सेलिब्रेट बिल्कुल। करते हैं तो इसी तरीके से ये बनाते हैं बहुत फेस्टिवल बड़े लेवल पर बहुत- बहुत बड़े लेवल पर। अच्छा एक चीज़ और है कि ज़्यादातर खाना। हाँ पता मुसलसल अच्छा लंगर की के तरह साथ बिल्कुल हाँ लंगर ऐसे की ही तरह। होता है, ऐसे ही होता हाँ। है कि खिला रहे हैं। अच्छा आप क्या कह रहे थे? मैं ये कह रहा था कि ये वो लोग थे जिन्हें मतलब चक्कर क्या है, इंसान की सोच क्या है, इंसान की साइकोलॉजी क्या है। इंसान की साइकोलॉजी ये है माशरती जानवर। बिल्कुल इंसान कम्युनिटी के साथ लोगों के साथ मिल के रहना चाहता है, यानी ग्रुपिंग, ठीक है ना। अच्छा हो क्या गया है, दुनिया बहुत बिखर गई है, दुनिया जो है वो दूर दूर हो गए। अच्छा ये इतने पागलों की तरह इतना मतलब है कि क्रेज़ी हो के नाच या गाना या योगा या मतलब है कि सीखना चीज़ों को अपने आप क्रेजी तो नहीं कहेंगे, मुझे ऐसा लगता है क्रेज़ी का मतलब प्लेजर मिलता है इनको, इसी में प्लेजर मिल रहा है। इसकी वजह क्या, इसकी वजह ये कि इन्हें यहीं पर सुकून मिल रहा है। सुकून मिल रहा है। ये था ना कि मतलब विलेज ऑफ पीस लिखा हुआ था, तो मैं इसका मकसद यही कर पाई हूँ कि मतलब यहाँ पे इनको जो प्लेजर मिल रहा है, यहाँ पे जो इनको रिलैक्सेशन मेडिटेशन मिल रहा है वो कहीं नहीं। ये जो अपने घरों से आए हैं यहाँ पे स्टे कर रहे हैं, कैंपिंग कर रहे हैं, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ये बहुत खुश होते हैं यहाँ आकर। नज़र आ रहा है बिल्कुल बहुत खुश है, लोगों से जुड़े हुए हैं, अटैच्ड हैं। और जिस तरीके से आपने देखा कि गा रहे थे, बिल्कुल डांस कर रहे थे, मुझे बहुत 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 अच्छा लगा, बहुत मज़ा आया देखकर कि इस हद तक जुड़े हुए। अच्छा मुझे पता है स्टार्टिंग ये वही लग रही है जो सिरला जी ने करी थी, चीज़ें मैच कर रही हैं कि और उनकी बुक्स भी पढ़ी, मेडिटेशन है, हरे कृष्णा हरे हरे। हाँ और ये इन्होंने अभी तक इसको बरकरार रखा। जाहिर सी बात है कि वो उन्होंने यूँ समझ लो कि एक चिंगारी लगाई थी। इस फेस्टिवल में आप एक आग देख रही हो। अच्छा मैं चिंगारी लगाने वाले वो थे। हाँ। और वो फैल चुकी है। अच्छा ये अगर मैं ये कहूँ कि ये उनके डायबिटीज है तो गलत नहीं होगा कि ये अकीदतमंद हैं और यही मतलब उनको मानते हुए उन्हीं की बातों को फॉलो करते हुए चल रहे हैं। बिल्कुल
तो इसी में इनको प्लेजर, इसी में इनको पीस मिल रहा है और बाकायदा नज़र भी आ रहा है और अच्छी खासी तादाद। और इन्होंने बताया भी है कि यार यहाँ पर आने वाले लोग इतना खुश रहते हैं, 4-5 हज़ार से तो कुछ कम नहीं ठीक है ना, इतना खुश रहते हैं और वहाँ से यहाँ से चीज़ें सीखते हैं, फिर आगे जाके लोगों को सिखाते हैं। और ये मतलब है कि एक कामयाब, हमेशा से काफ़ी टाइम से कामयाब जा रहे हैं हम लोग, मतलब एक अच्छे तरीके से इसको सेलिब्रेट कर रहे हैं। मैं कहूँगी रूह को सुकून मिलता होगा। ऐसा कोई भी फेस्टिवल हो या इस तरीके की कोई भी मतलब मेला हो जहाँ पे आप जाओ तो आपकी रूह को सुकून मिलता होगा, आपकी रूह ऐसा लगता होगा कि सेटिस्फाइड है। अच्छा, हर शख्स यहाँ पे खुश नज़र आ रहा था। अच्छा, वो रथ भी निकाला हुआ था, रथ भी निकाला हुआ था। हाँ, ये हमने उनकी उसमें देखा था कि उसमें बताया गया था कि इनको मतलब मना कर दिया गया था सिल्ला जी को कि केदारनाथ नहीं आएंगे, तो इन्होंने अपना रथ निकलवाया था अपने वही डेवोटीज के साथ। अच्छा, ये ज़रूरी नहीं है कि वही वाली बात है कि आपने एक बताया था ना कि हमने पिछले किसी वीडियो में देखा था हिंदू धर्म के बारे में कि आपको ज़रूरी नहीं है कि आप हिंदू धर्म अपनाएं, लेकिन आपको आपको हिंदू धर्म अपने आप पास में खुद ही ले लेता है। ये एक तरह से इसको सनातन धर्म कहते हैं। मतलब है कि एक तरह से ये लोग समझो सनातन धर्म में आ चुके हैं और मतलब है कि उसको मतलब है कि सनातन धर्म ये है कि अमन, खुशी, नहीं रूल, ऐसे रूल्स जो हमेशा वैलिड रहेंगे। अच्छा, अमन इसको नाम दे दिया कृष्णा विलेज पीस। तो इसका मतलब ये है कि देखें इनका मोटिव जो है, इनका जो मकसद है अमन है। अगर यही लोग हैं, इन्हें अगर कोई मुद्दा ना दिया जाए, इन्हें कोई पुरसुकून चीज़ ना दी जाए, इन्हें कोई फेस्टिवल ना दिया जाए या इन्हें कोई मकसद ना दिया जाए ज़िंदगी का, तो यही लोग आप यकीन करें क्राइम की तरफ भी जाएंगे, यही लोग गलत तो हमने देखा तो था उनकी बायोग्राफी में कि ये ऐसे ही थे कि मतलब नशे करते थे और इस तरीके से थे, इनका कोई मकसद नहीं था। तो सिल्ला जी इनको राह रास्त पड़ रहा है। और मैंने देखा अभी वीडियो में उस लड़की को और दूसरे बहुत सारे लोगों को, एक लड़की जो मैंने बिल्कुल फोकस में देखी कि बहुत बड़े सुरूर में थी, बड़ा सुकून की वो जब आपको मतलब इंतहा हो जाती है ना सुकून की, तो आप क्या ऑटोमेटिकली मतलब आप बिल्कुल क्लोज कर लेते हो और ऐसा लगता है कि बस कोई टेंशन नहीं, कोई स्ट्रेस नहीं है। तो वो वाली कंडीशन थी। इस हद तक ये इस चीज़ को एक मैं ये कहूँगी जुड़ चुके हैं। और वाकई इसको हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा मैंने पहले भी अपनी एक वीडियो में कहा था कि ये ऐसा लगता है कि अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा हो और वाकई आपको एक रिलैक्सेशन बार बार अगर आप पढ़ते हो या सुनते हो तो आपको फील होता है। आप देख रहे थे कि जितने भी लोग नज़र आ रहे थे हमें अपनी लाइफ में खुश थे। और इन लोगों को मेरे ख्याल में इतनी बड़ी तादाद में 10, 15, 20 लोग होते तो समझ में आता है कि पकड़ के ले आए, ठीक है ना। ये इतनी बड़ी तादाद में और इतने हैप्पी जो लोग दिख रहे हैं, ये अपनी मर्ज़ी से आए हुए लोग हैं, अपनी खुशी से आए हुए लोग हैं। और मेरे ख्याल में शायद इस फेस्टिवल का, इस पीस विलेज का, इस फेस्टिवल का इंतज़ार करते होंगे। हाँ, बिल्कुल कि हाँ भाई कब होगा। और यहाँ पे लोग ये जो 4 दिन गुजारते हैं, 4 दिन का शायद मेरे ख्याल में बताया था, जो 4 दिन गुजारते हैं इसमें ये बहुत कुछ सीखते हैं, बहुत कुछ लेकर जाते हैं। आपने देखा टीचर भी रखे हुए वहाँ पर, ठीक है ना। आप ये ना चाहते कि 4-5 दिन में इनके पूरे साल का गुजारा हो जाता होगा। फिर इसके बाद मतलब पूरा स्ट्रेस इनका निकल जाता है, इनको इस हद तक मेडिटेशन मिल जाता है, इतना सुकून मिल जाता है, इतना प्लेजर लेकर जाते हैं ये कि मुझे ऐसा लग रहा है कि फिर पूरे साल ये स्ट्रेस में या टेंशन में नहीं आते हो। इसके अलावा भी इनके कुछ ना कुछ छोटे मोटे क्लासेस या योगा चीज़ें, और इसमें कुछ ऐसी चीज़ें भी मेरे ख्याल में इस फेस्टिवल में बता दे होंगे जो हर शख्स अपनी डेली रूटीन में करे। अच्छा, और सबसे बड़ी चीज़ जब ये इस हद तक जुड़ गए तो इनके लिए तो ये काफ़ी होता होगा, हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा। वैसे भी ज़रूरी कोई एक रोक टोक तो नहीं है ना कि इनको यहीं पढ़ना है, नहीं, घर में भी कहीं पे भी। मैं बता तो रहा हूँ कि कुछ ऐसी चीज़ें बता दी जाती होंगी, प्रैक्टिसेस पर डे के हिसाब से, डेली के हिसाब से कि आपने इतने बजे तक ये करना है। इनको लाइफ गुजारने का एक तरीका बताता दिया होगा, जिसके बाद ये सेहत रहेगी, खुश रहेंगे। बिल्कुल यकीनन। अच्छा, एक बहुत ही खूबसूरत वीडियो और वक्त के साथ साथ ऐसा लगता है कि हिंदू धर्म के हवाले से हम बहुत ही कुछ जान रहे हैं और इनके इसके बारे में लेकिन अभी भी लगता है वाकई कि बहुत कम है, शायद हम 1% भी नहीं जान पाए अभी तक। तो एक बहुत ही खूबसूरत वीडियो चीज़ें हैं जो जानने के लिए बाकी है, लेकिन ये वीडियो अपनी जगह बहुत, मैं तो कहूँगी बहुत पीसफुल वीडियो, वाकई पीस हमें फील हुआ। ठीक है, तो दोस्तों दोबारा किसी और वीडियो के साथ आपसे मुलाकात होगी, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।